Okay. So, hello everyone. I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you everyone? केमिति सब अच्छा? Oops. Actually, I thought भाभी थिली कि blazer drivers पे नहीं जीवी तीनटा blazer है योरानी ओके की रखी जी सेति पे लोगो काट दी थी. But anyway, काली देला. ऑडियो वीडियो क्लियर अछि जदि मझिरे ब्लर हैला ताहाले मते प्लीज कहि दबो. ओके तो स्टार्ट करिबा आजिर क्लास. होप आजि पेड बैच रे लाइव क्लास बहुत मस्त थिला, ब्यूटीफुल फर्स्ट क्लास थिला. सौम्य रंजन सेठी थैंक यू. आसा तो स्टार्टिंग क्लास सॉरी स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट करिबा हैला. समस्त को गुड इवनिंग, समस्त की प्रणाम एंड आउ कोन कहबी जय जगन्नाथ हैला. स्टार्ट करिबा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मान को कहि दोउची कि जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती बैच परचेज पाई आई विल सजेस्ट टू टेक द महापैक बैच इन 3999 रे. एंड आपण माने जदि चाहू जंदी किछि स्पेसिफिक बैच नेबा पाई ड्यू टू द किछि भी लाइक आपनकर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नाही देन आपण माने किछि भी स्पेसिफिक बैच नै परिबे. जेते आरआई अमीन आपनकर मुंडो ऊपर अछि आपण माने आरआई को नहीं पारिबे बैच प्रयास बैच एल्स आपण माने उत्कर्ष सीजीएल बैच भी नहीं पारिबे. उत्कर्ष इज 11,999 and the price will be the 1499. ओके बाकी एक्सेट्रा आपण माने देखुचंदी बहुत सारा बैचेस अछि जोटा भी आपण माने चाहिबे परचेज करि पारिबे. ओके ए सब बैच वन डे एग्जामिनेशन बैच आपनकर 1 year वैलिडिटी रहिबो बट आपनकर महापैक र प्राइस 3999 2 year वैलिडिटी रहिबो. एते मनी काई कोन केते मनी किछि नाही एई तो 1000-2000 टंका भाबो त माने जाई कि बारबिक्युलेशन दिथर खाई पळे आसियो. आसो तो ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे जदि आपण माने प्रिपरेशन करूछंती देन दिस इज द अधिकारी बैच रहउछ आपण माने को ओसीएस प्री 2025-26 1 year वैलिडिटी 6999. अधिकारी जदि प्री प्लस मेंस करूछंती 1.5 year वैलिडिटी 11999. ओके एंड रेस्पेक्टिवली आपण माने किछि भी क्वेरीज अछि तो कांटेक्ट नंबर को कॉल करी के सॉल्व करि पारिबे. टीचिंग रो सॉरी दैट्स माय बैड स्लाइड आनिया को भूली गली. अपार्ट फ्रॉम दैट जदि टीचिंग एग्जामिनेशन टाइम आपण माने प्रिपरेशन करूछंती स्पेसिफिक टीजीटी बैच अछि, जेटी एंड एटी रो बैच अछि एंड आपनकर संस्कृत रो पेड बैच भी अछि. तो आपण माने हेल्पलाइन नंबर को कॉल करी की हेल्प पाइ पारिबे. स्टार्ट करिबा. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास कहिछि व्हाट इज द मिनिमम टेंपरेचर रेंज इन कोरापुट एंड कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग विंटर. जियोग्राफी कंटिन्यू चली छै आपण मानकर ए पर्यंत ओवर ऑफ हेनी हैला. जियोग्राफी ओवर ऑफ हो तापर बहुत सारा टॉपिक रहलानी हम हेबा. मैम पीडीएफ कोठी मिलिबो बबलू बाबू. पीडीएफ आपनकर टेलीग्राम चैनल रे वेदांत क्लासेस आपण माने सर्च करि देबे. टेलीग्राम चैनल रे एंड ऑफ द क्लास आपनको पीडीएफ बाय 11:30 आपनकर पीडीएफ अपलोड हे जाउछ हैला. टोटल होल डे रे जते आपनकर YouTube रा क्लासेस होउची 11:30 सुधा आपनकर क्लासेस रा पीडीएफ प्रोवाइड करा जाउछ. आसो तो फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द मिनिमम टेंपरेचर आपनकर कोरापुट कंधमाले जते बेले पचारिबो कोन कहि परिबो अप्रोक्सीमेटली केते रहउची. अरे 7 to 9 काहे की कहउछो मिनिमम कथा कहउची पा. कंधमाल हमें जानछे सबटु कोल्डेस्ट एरिया बोली जानिछे. कोरापुट हेला कंधमाल हेला हमें कहउछे दिस आर द स्पेसिफिकली प्लेसेस लाइक कोन दारिंगबाडी पई. तो दारिंगबाडी जोठी अछि आपण माने कोन कहि परिबे काहे की आपनको 3 to 4 डिग्री देखा गलानी की मते कहंतु ऑप्शन ए तमन को देखा गला कि नहीं. yes or no. ऑप्शन ए देखा गलानी डायरेक्ट बी को जंप करूछो कोन आउ तम माने को कहिबी. आपण माने जानि चंती कश्मीर ऑफ ओडिशा दारिंगबाडी एंड दारिंगबाडी प्रेजेंट वेयर नाइन द कंधमाल. स्टिल
स्टिल भूल भाल आंसर दउछ कोन आउ कहिबी आसो So right answer, the minimum temperature range in Koraput and Kandhamal district during the winter is generally 3 to 4 degrees Celsius in some areas during the cold waves. Okay, so 3 to 4 को आपण माने list बोली count करके नेबे because of the elevation आपण माने जानि संती because these districts are located at a high altitude and आपण माने जते ऊपर को जिबे आपण को सेति की cold experience करिवे जते तळु को जिबे सेति की hot experience करिवे temperature आपण कर drops करे gradually when you are going to the upwards एति की clear winter extremes रे आपण कर कोन हुए ना during the peak winter आपण माने जानि चंती December हेला या फिर January हेला the common mercury आपण कर dip हेइ थाए केते ना 3 to 4 degree Celsius को in on zen okay I am staying there wow की भाग्य तमरो आसो मते को in which areas of Odisha does the temperature dip to 7 degrees Celsius during the winter season तो को एरिया को हम रिलेट करिबा कोस्टल एरिया को ऑलरेडी मु तम मानको एलिमिनेट कर देछि रेस्ट आपन कर तीनटा रहिला नॉर्दर्न रीजन वेस्टर्न रीजन इंटीरियर रीजन तो कोटा को आपण माने रिलेट करि परिबे ऑब्वियसली कोन करिवे वेस्टर्न रीजन को सबुतिक को त आपण माने कवर अप करि परिबेनी बट स्टिल हमें कहि परिबा द इंटीरियर रीजन को हमें काउंट करि परिबा बिकॉज़ ओडिसा रा टोटल जियोग्राफिकल नक्शा को जति आखि सामने रे आपण माने रखु चंती So Odisha geography plays a major role in the temperature distributions like the interior versus the coastal. The interior रे जेते बेले सबुठु अधिक रहउची coastal सबुठु कम रहउची. The coastal areas are moderated by the sea. That's why we कहि परिबा that keep very warmer environment. However, the interior regions that is away from the sea and often हमें कहि परिबा hill region को भी नहीं परिबा. sea ठु दूर रे हेतिबो and पहाड़िया अंचल हेतिबो देन हमें कहि परिबा that is आपनकर mercury level बहुत ही कोन तळु को खसे at the night period होना नै yes the right answer it obviously आपनकर interior region हबो the temperature lies in the interior and western region of Odisha can reach to 7 degrees Celsius or lower during the winter season clear next jiba aso mate kuh during which month does Odisha experience little rainfall in the winter season रे भी Odisha रे किछि area रे आपनकर little rainfall experience होई थाए तो को रीजन को हमें रिलेट करई पारिबा तो रेनफॉल पचारी छी रीजन कथा ना पचारी के आपन को मंथ कथा कहि देछि हने नै मते को तो मते को ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज ओडिशा एक्सपीरियंस लिटिल रेनफॉल इन द विंटर सीजन अक्टोबर एंड नवंबर को जदि हमें रिलेट करौछे दैट इज एक्चुअली आपन का साइक्लोन फेवरेट मंथ तो ऑब्वियसली ए टाइम रे हमें ताकू नै जिबा कि रेन सहित रिलेट करिबा बट स्टिल जते बेले लिटिल रेन कथा पचारछि ताहाले आपन माने कोन ना जनवरी एंड फेब्रुअरी को नेबे ऑप्शन डी को नेबे ये अमित कुमार right answer होची आपनकर option D while we know the Odisha get the bulk of its rain from the southwest monsoon and हमें जानचे it does receive some retreating monsoon also or the कहि परिबा the western disturbance ପାଇଁ भी आपनकर rain water आसी थाए but still जब little rain कथा कहिची winter season कथा कहिची ताहाले आपण माने रेट करिवे काहा को ना January and February month रे the timing upon the period as January and February is when the state experiencing the light showers okay chalo next so right answer Odisha experience its main rainfall from the southwest monsoon during the July to September जोटा कि main rainfall आपनकर केते बेले आसे ना July to September रे आपनकर main rainfall हुए but जेते बेले पचारछि गोटे negligence rainfall या फिर all of sudden गोटे कोनोसी रीजन पय हेइ जाउछि ताहाले हम रिलेट करिवे that to January को February को am I clear chalo next which of the following reasons in Odisha experiences thunder showers during the winter season? Thunder shower आपनकर जोटा कि एबे कहिले एक्जेक्टली विंटर रे जेहेतु विंटर चली छी त मजा लागिबो विंटर विषय रे पढिबा पई ओके त मते कहंतु विंटर रे आपनकर थंडर शावर भी एक्सपीरियंस हमें करूछे बट को रीजन रे केहे कहि परिबे द थंडर शावर्स को रीजन रे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑप्शन आपण मानको कथा कोन आउ काहे की गायत्री काहे की तमे तम ट्रैक रु बाहर को जाउछो तम माने जानि न तम मानकर फेवरेट ऑप्शन बा ऑल ऑफ द एबव नहले बोथ ऑफ द एबव सो इथे ऑल ऑफ द एबव नाही बा बोथ ऑफ द एबव अछि कोन चूज करिबा ना बोथ कहि परिबा ओके सो विंटर रेनफॉल इन द ओडिशा इज नॉट ऑलवेज a steady drizzle it is often हमें कहि परिबा that often comes in the form of कोन ना brief thunderstorm तो एक्जेक्टली हमें कहि परिबा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाई भी आसे इवन द कोन कहि परिबा ना ट्रफ लाइन पाई से आसे लाइक एक्सप्लेन करबा जदी मेट्रोलॉजिकल माने आपण मेट्रोलॉजिस्ट माने
स्टडी करंती द शिफ्ट आपनकर धीरे धीरे चेंज हुए क्रिएट हुए कोन जो ट्र आपनकर क्रिएट आउट ट्र जानि थिबे तो वेव लाइक स्ट्रक्चर आपनकर फॉर्म हुए जते बेले कोठी ना ओशन रे हुए तने आपनकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए दैट्स व्हाई हमें कहि परिबा द रेनफॉल हुए दैट इज द रियल रीजन बट आपनकर केबे केबे कोन ना किछि किछि रीजन रे विंटर रे भी आपनकर रेनफॉल आसी जाय थे दैट इज फोर रीजन कहिबा ना साउदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन क्लियर किछि डाउट नहीं गपुच जो माने समस्तिंक नजर माने समस्तिंक ऊपर मोर नजर अछि डोंट थिंक कि मैम बुझौचंदी त मो आमा मेसेज देखु ना आसो so right answer both मते को which local seasonal division marks the onset of the monsoon rains in Odisha अरे भाबिलो जति ऑफलाइन कोचिंग हे थांदा आ त माने एमिति गपु थांतो से टीचर पागल हे जाय न थांदा के भाबिचो त माने गोटे भलो सुस्त मस्तिष्कर लोक को यू पागल करके छाड़ी देबो माने तम पाखरे से कैलिब्री अछि के भाबिचो जॉब पाठ साठ पढ़िबारे कैलिब्री नाही बट पागल गोटे लोक को कर देबार कैलिब्री तम पाखरे भरा अछि विश्वास करो कौन कहूची राइट आंसर which local seasonal division marks the onset of the monsoon rains in Odisha that is what कौन हबो obviously आपनकर वर्षा हबो ओ सीजन को हम रिलेट करि परिबा monsoon माने आपनकर रेनी monsoon माने आपनकर वर्षा सो डिविजन्स मींस आपनकर कोन ना ऋतु ओके आमे जोडा को ओडिसा रे ऋतु ओडिया रे ऋतु बोली कहूचे ओके चलो सो आमे जानि छे इन ओडिया टोटल आपनकर जदी कैलेंडर को आमे काउंट करूचे द ईयर डिवाइडेड इनटू केतेटा ना 6 डिविजन्स कोन आसुची ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत तो एई अकॉर्डिंग आमे जदी देखुचे को रीजन होची मॉनसून ना वर्षा एम आई क्लियर क्लियर मने थिला तो छडा ऋतु एई मने अछि तो छडा ऋतु आसो next mate the local season divisions that marks the onset of the monsoon rains in the Odisha is Varsha next mate kuha वर्षा आकाशर वर्षा तमानको मनर सब एई गीत बाजुथो ना भयंकर पिला सब आसो मते को which local seasonal division in Odisha typically corresponds to the pre winter season kuha मधुस्मिता आई एम सो ग्लैड कि तमरो 6 टा ऋतु मने अछि छी आसो मैम मार्केट रे वर्षा ने बेबे ट्रेंड रे अच्छा गुन्ना भाई हो आसो मते को which local seasonal division in Odisha typically corresponds to the pre winter season pre winter कहिला माने आपण माने कहा को रिलेट करूछंती व्हाट डू यू मीन बाय जतले प्री विंटर कथा कहिची ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत तो शीत पूर्वर आपणकर की पडुची ना दैट इज द हेमंत है ना सो ए ओडिया कैलेंडर एटलीस्ट 6 टा ऋतु तो मन रखि दो ओके चलो नेक्स्ट मते को सो वर्षा दैट इज द रेनी सीजन शरद कहिले हम जानि छे दैट इज द मॉनसून पोस्ट मॉनसून प्री विंटर ए भीतर आपनकर शरद ऋतु रुए हेमंत हैला अर्ली विंटर एंड आपनकर ग्रीष्म हैला समर हैला चलो नेक्स्ट मते को ड्यूरिंग व्हिच लोकल सीजनल डिवीजन इज ओडिशा जनरली affected by high temperature and heat waves so obviously आपनकर कोन ना ग्रीष्म नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर इजी अछि आई नो दैट बट ताकू ओवर कॉन्फिडेंटली आंसर दबा ठीक अछि चलो नेक्स्ट मते को which season is the main crop growing time during the summer season in Odisha this is important आसो मते यार आंसर टिके कहिलो जेते बेले आपन को पचारुची एमिति कौन क्वेश्चन अछि विवेक अब भाई टफ क्वेश्चन सेमिति तो आनी भी पारी बट गोटे गोटे तो तमान को इजी क्वेश्चन आनिबा दरकार ना सो दैट तमान को ऊपर गोटे कॉन्फिडेंस आसीबा दरकार अरे आमे भी किछि आंसर देई पारुछु है ना विवेक आसो द मेन क्रॉप ग्रोइंग सीजन कहूची ते बेले ड्यूरिंग द समर दैट इज हां मो जानिथिली सब रबी कहइबो हेई देखो तमान को ओवर कॉन्फिडेंस रो ऊपर तळ हे गला हां ना नहीं तो राइट आंसर कौन एठी हबो खरीफ कौन हबो शरद सीजन कौन हबो ब्लू एथे भाबी पारे कौन अछि या भाबी पारे कौन अछि द क्वेश्चन रिलेट्स टू द टाइमिंग like of the agricultural cycle in Odisha that means आपण मान जानि संती monsoon crop आमे कहूचे खरीफ सीजन को ओके आसो
So right answer कौन हो जाए अपना करो ना खरीफ. The term kharif is derived from the Arabic word for autumn because the crops are harvested in the autumn. So the kharif season coincides with the monsoon season, typically running from June to July to September to October, during which the main crop growing time occurs due to the na substantial rainfall. Am I clear? ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାମ୍ ସେଇପା ओवर कॉन्फिडेंट कौन आउ कहिबी रबी सीजन को आपण माने विंटर क्रॉप बोली कहि परिबे नवेम्बर टू एप्रिल ए जो रबी सीजन ना एटा को आपण माने विंटर क्रॉप नवेम्बर टू एप्रिल कहि परिबे बट द मेन आपणकर ओडिसा रे खरीफ ओके चलो नेक्स्ट अच्छा जेत माने मते कोन कहिला टिके एनीवन जेत माने मते टिके कहिलो ना शॉर्ट समर सीजन रे दैट मींस आपणकर मार्च टू जून आसे सपोज जो लता भली आपणकर माडी थाए काकुडी हे गला वाटरमेलन हे गला तो एई सब को हमें कहि परिया लता जातीय गछ को हमें कोन ना जेत कहि परिबा दिस इज आपणकर कोन ना मार्च अप्रैल एई मंथ रे आपणकर थाए शॉर्ट समर पीरियड कहि परिबा ऑटम सीजन यू ऑल नेक्स्ट सॉरी देखि दला आंसर in which local seasonal division do farmers in Odisha mainly cultivate paddy तो को सीजन रे मते कुह mainly paddy cultivation हुए in Odisha मते कुह which season in which local seasonal division do farmers in Odisha mainly cultivate paddy that means आपनकर ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत paddy कथा कहूची माने आपण माने रिलेट करिवे काकू हेई पा सब भूलभाल करिवो yes that is answer कोन हो ना paddy cultivation only वर्षा season So paddy हमें जानते the staple food of Odisha. This is required कौन is a vast amount of water and the humidity. So water and humidity आपनकर just any season of the वर्षा रे आपनकर possible हेई थाए. माने पडुची the वर्षा season June रो जुलाई रे आपनकर कोन ना यूटिलाइज हेई थाए heavy monsoon period रे. So related with the वर्षा. So farmers in Odisha mainly cultivate paddy in the local seasonal division called the वर्षा. Next मते कुहा which of the following is the main source of rainfall in Odisha main source of rainfall in Odisha कौन हबो अच्छा आंसर दियो मते कुहा which of the following is the main source of rainfall in Odisha main source of rainfall in Odisha कौन कहूची south west monsoon north east monsoon winter monsoon or none of the above कौन कहूची राइट आंसर कोटा हबो ऑब्वियसली आपनकर ए हबो कोथि पई दिस लास्ट चैलेंज बी कोथि पई लास्ट चैलेंज बी कोथि पई केएफडब्ल्यू बी कोथि पई द राइट आंसर आपनकर साउथ वेस्ट मानसून हबो स्टार्टिंग रु एबे जाय चिलोउची कि साउथ वेस्ट मानसून पई ही आपनकर रेनफॉल आसे ओडिसा फिर भी द क्लाइमेटिक ऑफ माने द क्लाइमेट ऑफ ओडिसा आपनकर चेंज हुए डिफाइंड एज अ ट्रॉपिकल मानसून बिकॉज़ ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून फिर भी आपण माने कंफ्यूज ओके तो जून रे आपनकर अराइव हुए एंड अंटिल सितंबर पर्यंत आपनकर ए रुहे कहि परिबा कोटो ना जून टू सितंबर नेक्स्ट अच्छा आउ थरे कहि दोची महापैक रो प्राइस 3999 बट वैलिडिटी 2 इयर यदि आपण माने याकु नोछन 2 इयर्स भीतर जत्ती की भी वन एग्जामिनेशन आसुची या अंडर रे पळे आसीबो अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आपण मान चाहउछन किछि स्पेसिफिक बैच पे नै परिबे एंड आपनकर सिविल सर्विस पय भी अधिकारी बैच जोटा कि ओसीएस प्री 2025-26 पे लॉन्च हेछि आपण माने ताकु नै परिबे विथ द वैलिडिटी 1 इयर 6999 इज द नॉमिनल प्राइस बट यदि अधिकारी प्री प्लस मेंस आपण माने नेबा को इंटरेस्टेड अछन देन डू like go for that 1.5 year I mean 1.5 वर्ष validity सहित आपनकर 11999 होची प्राइस with हेल्पलाइन नंबर ऑफिस नंबर को आपण माने कॉल करी कि किछि क्वेरी अछि त पचारि पाए ठीक अछि चल सो मते को व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन ओडिसा ओडिसा रे मॉनसून रेनफॉल रो कोन सिग्निफिकेंस अछि रे मते कुह ओडिसा रे द मॉनसून रेनफॉल रो सिग्निफिकेंस कोन रहिबो What will be the right answer? कौन कहूचो फास्ट देखो पढ़ी चलो तापर स्टेटमेंट वाइज हमें ताको रिलेट करिबा फास्ट कोन कहिछि ना इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द स्कॉचिंग समर हीट इज दैट ट्रू एठी आपन को कोन कहिछि ना व्हाट इज द राइट वन तो ऑब्वियसली जदी हमकु वर्षा न आसीला ताहाले हमें जो माने हीट वेव आसुची हॉट समर रक्षा केमति पाइबा so that can be the best option then आसुची सेकंड इट प्राइमरीली सपोर्ट्स टूरिज्म इन द स्टेट मते कुह एठी आसुची जो इट प्राइमरीली सपोर्ट्स द टूरिज्म इन द स्टेट ता सहित किछि रिलेशन अछि कि यस और नो रे मते कुह
D 1 and 4 obviously hobo because it has no major impact on the state एमिति तो नहीं बहुत ही major impact अच्छी it controls crop production and the conditions तो yes तो only अपन कर कौन 1 and 4 will be the right one गोटे थर चाहा हो समस्तिंकर गोटिए मत एक मत हेचंदी अपन माने ना कि आसो so option D will be the right one next मते कुह what is the minimum amount of monsoon rainfall required for a good paddy harvest in Odisha केते की amount रो आपनकर रेनफॉल रिक्वायर हुए जते बेले हमें कल्टीवेशन करूछे even I'm not focusing to them but if you are saying that I cannot deny them I cannot stop them to come in my class but if you guys are interested then आपण माने to quit हे जानतु recording देखितेबे but एमानु को मु केते ब्लॉक करि परिबे ओके बेटर मु कहूची भी बार बार कहूची आई एम नॉट वरीड फॉर माय लाइव व्यूज तो माने रिकॉर्डिंग भी देखो दैट्स ओके बट जदी पढिबार अछि ताहाले चैट को ऑफ करी की केवल पढ दैट्स इट दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू इन सच सिनेरियो ओके चलो so what is the minimum amount of monsoon rainfall required for a good paddy harvest in Odisha तो ओडिसा रे कोन कहि परिबा बाघ काई एमती होउछ तमे पिला माने डरी कि तम ना धरु ना एक्चुअली तमु ही कहउछन तमे डिस्टर्ब करूछ बोली बुझिलो काले बाघ कामुडी दबो बोली आसो what is the minimum केते कहि दिली मिनिमम आपनकर 120 to 140 आपनकर आसीबो 120 to 140 आपनकर आसीबो सेंटीमीटर आपनकर मिनिमम रिक्वायरमेंट थाय so the minimum amount of monsoon rainfall required for a good paddy harvest in Odisha is 120 to 140 centimeter the paddy fields generally require करे an annual rainfall at least 100 centimeter okay चलो next मते को which region of Odisha receives high monsoon rainfall को रीजन को हमें रिलेट करै पारू छे हे लकी बाहरी गलानी टाइगर माने बाघर सपोर्ट रे काहे कि मो बाघ भाई को एमती कहिलो मैम दिस इज नॉट फेयर आपण कहि परिबे ने एमती माने आंसर कर किछि भी बाघ त मु कहि दिले ते सत कथा कहिबा पई चुप हे कि सुनि देथिले नै न थांदा एमिति तमे मो कथा को मानुछ सपोर्ट करूछ आसो so which region of Odisha receives high monsoon rainfall जते बेले पचारुची को ओडिसा रा को पार्ट आपन को रिसीव करूची ऑब्वियसली आपन को नॉर्दर्न एरिया दैट मींस बैतरणी बेसिन आपन को एक्सपीरियंस करिवो ऑप्शन बी कोथि पई रितेश ए कोथि पई हबो मते कुआ नॉर्दर्न आपन को ऑलवेज बैतरणी बेसिन दैट हैज अ हाई एक्सपीरियंस आपन को रेनफॉल बिकॉज़ ऑफ इफ वी विल कंपेयर करिबा हमें the parts of the केउझर हैला मयूरभंज रीजन हैला the river basin आपनकर संबलपुर सुंदरगढ़ एको भी रिलेट करे परिबा they receive some of the highest rainfall because of the कोन ना डायरेक्ट path of the monsoon depression जते बेले कमिंग आपनकर आसे from the Bay of Bengal to the Odisha coast but starting आपनकर northern side ru ही हुई ठीक अछि आसा so the region of Odisha that receives the high monsoon rainfall is the northern Baitarani basin as well as the southern Odisha region in eastern Ghat. After that, what is the most important thing that affect how well crop grow in Odisha? The main thing जोटा affect करे मते कुह मैम block option भी अच्छी white रे definitely बाघ you didn't know about that আজি बिलीव करो दिनटा बहुत हेक्टिक थिला बट इवनिंग रे एबे जेम खाली हसुची ही हसुची आई डोंट नो भगवान टिका जे अधिक खुशी अछंदी मो पे कुह मते व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग that affects how well crop grow in Odisha रे किते भलो आपनकर crop grow करिवो सेटा आपनकर अफेक्ट पड़ेबो कहा ऊपर ऑब्वियसली आपनकर monsoon rainfall ऊपर जदी monsoon rainfall आपनकर आसीबो नाही ताहाले त आपनकर ड्रॉट कंडीशन पड़े आसीबो फिर भी आपन माने ऑप्शन सी मारि छथि अन नै मते कुआ ताहाले बोथ ऑफ दिस विंटर रेनफॉल ऊपर कोन डिपेंडेंट एमती अछि विंटर रेनफॉल हेबा द्वारा कोन टाइम इति गोटे माने वेदर नुवा गोटे जिंस लेखा हे जाउछि मते कुआ त टिके
मते जान आपण माने समस्त जानि चंती कि द लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब अप्लाई होची दैट हैज द इंट्रोडक्शन इन द इरिगेशंस तो आपण को रेनफॉल वंस हेबा दरकार टू स्टोर द वाटर दैट्स व्हाई तापर आफ्टर दैट जेबले आपनकर ओवरऑल आपण माने जानि चंती जेते बेले छत्तीसगढ़ ऊपर आपनकर डैम ही जाईची दैट यू नो आपनकर हीराकुद भी डैम हेची तो ए सब रे आपण माने देखिथिबे कटक एरिया को जदी जाई जिबे बुलिया पई त नदी नाळ सब सुखी जाईची बट स्टिल इरिगेशन होउची ना नाही ड्रॉट कंडीशन जेमिति आपनकर आगुरु आसीतिला सेई भले ड्रॉट कंडीशन कोन आपण देखिया को पाउचंदी कि सेमिति त आसुनी बट हां एक्सेस वर्षा जो आपनकर किछि अमल आपनकर नष्ट होउची सेई रीजन आपण माने देखि पारुचंदी ओके हां चलो नेक्स्ट मते कुआ सो मॉनसून रेनफॉल इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप ग्रोथ आपण माने को इंटरव्यू दरकार अरे वाह तो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा रिसीव हाई मॉनसून रेनफॉल को रीजन या भितर मते को हाई कोन ना हाई रिसीव करूची हाई मॉनसून रेनफॉल संबलपुर सुंदरगढ़ केउझर कमेंट ऑप्शन अछि अब काई पढिबी जानिस त माने डेई पडिबो आसा so next मते को which of the following regions in Odisha receive low rainfall during the monsoon season कोटा को हमें कहि परिबा during the monsoon season ये सब लो rainfall experience करे क्विकली कहिला एठी का को रिलेट करू छ टिके देखिबा पंडित दल गपिला बेलु तो पूरा आग माडी आसुछ 100 स्पीड रे जो ट्रेन क्लास करिके त माने आसुछ नमो भारत तापर आपण मानकर गति को अटके करूनी को मैम क्लाउड सीडिंग विषय प्लीज कहंतु लंबोदर दिस इज नॉट द क्लास टू से अबाउट द क्लाउड सीडिंग बट इफ you guys will interest like have the interest to know about that definitely I will make a short video and post on the Vedant classes so you can watch there okay केडी सर चार्ज कर दोचनी हां बा तमानकर चार्जिंग एठी बाहरुची मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन ओडिशा रिसीव लो रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून रीजन मॉनसून रीजन कहउची लो रेनफॉल कहउची दैट मींस आपनकर कोन सदर सब डिवीजन हबो की कोठी ना सदर सब डिवीजन रे हबो बिकॉज़ नॉर्थ ईस्ट रे तो हबनी नॉर्थ पे आपण मान जानि सन्दी हाईएस्ट रेनफॉल एक्सपीरियंस करूची वेस्टर्न सुंदरगढ़ भी हबनी मिडिल बैतरणी बेसिन तो बिल्कुल हबनी ओके आई नो नमो भारत बहुत स्पीड ऑब्वियसली जीवो एक्सपीरियंस एते अछि तो स्पीड हबो ना आसो तो सदर डिवीजन को हम रिलेट करे परिबा हम जानि छै लाइक while some part of Odisha are lost and receive heavy rains other like some other part also face a deficit due to their insufficiency और हमें कहि परिबा due to the specific location तो से पर्यंत आपनकर रेन वाटर पहुंची पारेनी हना नहीं तो राइट आंसर दैट इज द सदर सब डिवीजन नेक्स्ट जानिबा दरकार नहीं जति कि जानु छ बहुत जानि दोछ दरकार ठु अधिक जानु छ सोना ओके बी ऑन योर लिमिट सेट द लिमिट आसो so the southern subdivision of Keonjhar district receives low rainfall compared to other regions in Odisha the low annual rainfall region 135 cm or less rainfall mostly lie in the southern east in Odisha okay chalo next mate kuha what is the primary reason behind the low rainfall in western Odisha during the monsoon season kaha ko ame kahi pariba quick मते को व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द लो रेनफॉल इन वेस्टर्न ओडिशा रे आपन को लो रेनफॉल हुए व्हाट इज द प्राइमरी रीजन को मते आइदर मेसेज करनी मेसेज करी के डिलीट करनी आई जस्ट हेट दैट थिंग को रीजन फॉर लो रेनफॉल इन वेस्टर्न ओडिशा ताको हमें कोन कहि परिबा ऑब्वियसली आपन को रेन शैडो ऑफ द ईस्टर्न घाट तो आपन सॉरी हिमालय में देली रेन शैडो ऑफ द ईस्टर्न घाट रो अपोजिट रे आपन को रहउ ईस्टर्न घाट रो फ्रंट रे आपन को रेन होची तो हमें कहि परिबा द प्रोसेस आपन को केमिति होची ना साउथ वेस्ट मानसून आपन को जते बेले थ्रू द विंड आसुची हिट करूची ईस्टर्न घाट को एंड द माने तार अपोजिट साइड द वाइंडवर्ड साइड हमें ताको कहउचे वेयर दे राइज कूल एंड रिलीज द हेवी रेन फ्रंट रे आपन को हेवी रेन होची एंड बैक साइड रे आपन को कोन सिक्योरली रहि सोची ओके चलो Next, so Western Odisha experienced the low rainfall during the southwest monsoon season, primarily due to the rain shadow effect of the eastern Ghat. Clear? Next question, mate ko which of the following districts in Odisha are part of the region that receives low rainfall during the monsoon season due to the rain shadow effect of the eastern Ghat mountains? जते बेले eastern Ghat कथा कहूची and आपन को कोन
को रीजन कथा कहूची ईस्टर्न घाट आपनकर स्ट्रेच होची कोठु को जाय ताको आपण माने रिलेट करे देबे ऑब्वियसली आपनकर केबीके रीजन सहित जीवो वेस्टर्न ओडिसा देखो केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक जाजपुर ये सब तो आपनकर कोन कोस्टल रीजन पळेला तो बलांगीर नुआपड़ा ये सब आपनकर कोन लैंड लॉक रीजन खाना में कहि परबे द नियरेस्ट टू द ईस्टर्न घाट बेसी स्पीड हे जाउची की बेसी स्पीड कहूची की कहबो मते कि मैम टिके स्लो कोन if you require that awesome so this is the okay so the district of Balangir and Nuapada the part of the kono ame kahi pacha famous the KBK region KBK belt to apan ko relate kari fine okay chalo next question among the following options which district in Odisha are least affected by the rain shadow effect during the monsoon season Jharsuguda Sambalpur Baudh and Devgarh Sundargarh and Keonjhar Rayagada and Kalahandi एटी कहा को रिलेट करे परिबा मते को श्रीकांत महाराणा तम घर कोठी अछि एक्चुअली माने तमे को डिस्ट्रिक्ट रो बिलोंग करू छ मते प्लीज टिके को आई वांट टू नो दैट मैम हैव यू टेलीग्राम चैनल देन आफ्टर क्लास कैन यू सेंड पीडीएफ obviously file there is no need to say me again every day class सरला परे आपनकर pdf share होछ okay the right answer कोन होची the district least affected rain shadow हमें कहि परिबा that is obviously आपनकर सुंदरगढ़ and केउंझर ही होबो okay तो बाकी सब तो आपनकर जानु चंदी वेस्टर्न ओडिसा रो पार्ट वेस्टर्न ओडिसा रो डिस्ट्रिक्ट्स आपन माने रिलेट करै परिबे नेक्स्ट So the district of Sundargarh and Keonjhar, the districts of Sundargarh and Keonjhar also referred to as the Keonjhar and Keonjhar, Kendujhar, whatever, are located in the north and northern western part of Odisha. So these districts frequently experience a high percentage of heavy rainfall events during the monsoon season, with Keonjhar receiving it most frequently among the northern district. Next question mate kwa which of the following मते को which of the following factors affect the rainfall pattern in Odisha Odisha रे rainfall pattern को आपनकर किए बेसी like effect पकोची and the affected of the rainfall pattern by which disturbing element कहि परिबा आसा so topography it's the topography distance from the sea wind pattern so obviously आपनकर all of the above बसी जीवो right answer होची the rainfall pattern in Odisha is influenced by the multiple factors like the topography हैला even the distance from the sea हैला wind रो pattern ऊपर depend करूची so these all are the right answers okay next चलो no ma'am what no आसा what is the primary reason for the winter rainfall in Odisha the primary winter rainfall आपनकर Odisha रे हुए exactly कहिथिली okay तो मते को primary reason आपनकर कोन winter rainfall Odisha रे कोथि पई हुए what is the main reason quick western disturbance कोथि पई हुए western disturbance पई ही होबो तो कोन रहउची ना impact of the western disturbance option A होबो काहे कि सब D मारुचो को खुशी रे डी मारचो किए से गध जे फास्ट डी मारला बाकी सबतिक मेंढा हमर दौड़िले सेठी मैम डी को लॉक एलओसी के लॉक ना एलओसी के लॉक कोटा को लॉक करिया को so when disturbance are extra tropical storm the originating in the Mediterranean region and travel ए तो मानिछि ना हां चलो डी को पुनी लॉक कर देबा ना कि चलो मते को which of the following regions in Odisha experiences the maximum winter rainfall due to the impact of the northeast monsoon मैम डी केते बेले डी को कहिली लकी सेनापति केमिति हबो डी ऑप्शन कोन अछि त माने कर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड आपनकर आसे को वेस्टर्न डिस्टरबेंस रुई त आपनकर क्रिएट हुए ना तो फास्ट आपन माने कोठी के जिवे आंबो खाइबा पई मार्केट जिवे जति आपन बाकू गछर पता अछि तो डेफिनेटली गछ बाकू जिवे थोड़ी ना मार्केट जे किनी केन के बिकुची ता बाकू जिवे मुंडा टिके लगांतु ना आसो so which of the following regions in Odisha experiences the maximum winter rainfall due to the impact of the northeast monsoon तो northeast monsoon सहित रिलेट करला काहा को हमें रिलेट करई पारिबा क्विकली कुह कि गोटे मैम को एज पचरुछि मो एज जानि कि कोन करिवो मो एज जानि कोन करिवो हां
एतिकी तो एज हेछि तुम मानकु पढेला भलिया आ तुम माने मो पाखरु पढिला भलिया is not that enough to know asa which of the following reasons in Odisha experiences the maximum winter rainfall due to the impact of the northeast monsoon quick जेबे खोजी की पाइबा आंसर फास्ट अंडा आस्तिला ना कुकुडा से आंसर जत्ते बेले पाइबो ए आंसर भी सत्ते बेले पाइछ हैला आसो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून आपन को पचारुची केबे ना ऑब्वियसली आपनकर कोस्टल ओडिसा को कौन करिवो ना नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून एंड द कोस्टल रेनफॉल का साथे रिलेटेड कोस्टल साथे रिलेटेड बिकॉज़ वी ऑल नो द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून आपनकर आसीबो दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट ना द रिट्रीटिंग मॉनसून बोली हमें ताको जानिछे ओके एंड द मेकानिज्म आमे कहि पारुचे एज द विंड्स आपनकर रिवर्स करूची कोन साउथ वेस्ट मॉनसून आसिला परे जेतेबेले आपनकर विंड रिवर्स करूची दैट इज मूव फ्रॉम लैंड टू द सी आपण मान जानसंती लैंड टू सी टू लैंड आपनकर कोन अप एंड डाउन होई थाए द पीक ऑफ द मॉइस्चर ओवर द बे ऑफ बंगाल देन बैक टू द मॉइस्चर टू द अगेन लैंडफॉल्स तो एटा होची टोटल रिलेटेड थिंग जोटी के हमें कोस्टल को फोकस करूचे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को फोकस करूचे बिकॉज़ बे ऑफ बंगाल हमर नियरेस्ट अछि हैला नेक्स्ट also so due to the northeast monsoon coastal Odisha experiences significant winter rainfall as the winds peak off moisture from the Bay of Bengal and they move towards the Tamil Nadu coast often bringing cyclones and the rain to the eastern coast of India including Odisha too okay chalo next kon kahichi mate ko which district in Odisha experiences the least winter rainfall due to its location further inland that means that district is obviously not in the coastal one तो कोटा हवा जगतसिंहपुर जाजपुर संबलपुर गंजाम कोटा को राइट आंसर एठी दोचंदी मोटी इनलैंड कथा कहिची क्वेश्चन आपन बेटी इनलैंड कहिची लैंड लॉक्ड कथा कहिची दैट मींस कोस्टल ओडिसा कोठी एठी ऑप्शन कोस्टल ओडिसा पुनी अछि कहीं की पछको रहउचो आगु को टिके आसो कौन कहूची ना संबलपुर ऑब्वियसली द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन विंटर फॉलोज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक ट्रेंड इन ओडिसा for the trend ame kon koi pariba na winter rainfall apankara generally decrease करे as you move from the northeast कोन ना towards the southwest the northeast to southwest को जदि हमें जिबा तो decrease हे जिवो तो संबलपुर apankara located in the western odisha तो northeast to southwest को जाऊ जाऊ धीरे धीरे से कोन पूरा कमी जिवो that's it एतिके जिंस मन रखियार अछि so next mate कुह what is the typical duration of the winter rainfall period in odisha due to the northeast monsoon सुनील बिसोई कौन कला हाँ विवेक मते कुआ हे सुनील बिसोई कौन कला क्विक देखो winter rainfall कथा पचारिछि what is the typical duration of the winter rainfall period in Odisha due to the northeast monsoon तो obviously आपनकर कोन हबो एठी ना the rainfall period कथा हमको कहूची हर नै मते को सो राइट आंसर एठी कोन आसीबो ऑप्शन बी आसीबो अक्टोबर टू डिसेंबर ऑब्वियसली काहे की ऑप्शन ए रे पुनी अटकिलो नवेम्बर टू जनवरी कोथि पय पुनी आसीला मते को अक्टोबर टू डिसेंबर कोथि पय नो साइक्लोन आपनकर आसुची डिप्रेशन आपनकर बे ऑफ बंगाल होची अक्टोबर मास रे आपनकर होची सो रिलेट कोथि पय करूची ना बट तम कथा रे भी पॉइंट अछि बट स्टिल ना ठीक अछि राइट आंसर बी हबो बिकॉज़ देखो January and February can see the rain. Yes, I can understand. But the most significant winter rainfall आपनकर आसीबो केबे ना as per records आपनकर as of now जति की record maintain हे सारी जी the alignment सहित the aligns with the transition month that is the कोन ना आपनकर October to December. Okay? पश्चिम झड़ अनुसार ना मु तुमको पूर्व झड़ अनुसार कहूची एटा राइट हैला A appropriate ना B will be the right answer हैला A is not also which of the following is considered to be high winter rainfall in Odisha which of the following is considered quick जल्दी आंसर दियो which मैम आज टिके ठीक होची आंसर पाठ पढ़ सब ठीक हबो
गाइस क्लास सरू मु तमन गोटे ट्यून कहबी आ तमे से ट्यून रे कहबो से गीतटा कोन हैला क्लास सरू तापर करिया को मते राइट आंसर एठी कोन हबो क्विक Which of the following is considered to be the high winter rainfall in Odisha? Obviously, आपनकर A5. Okay, so 5 centimeter and above को हमें consider करूचे. Not C, B. मन इच्छा काहे की मारुच? मैम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आनी जंती. काहे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मानला हला तुमको लागुचे. कोथि पई? Yes, ma'am. Aso. Next mate kuha among the following options which region in Odisha experiences the high winter rainfall ए region कथा मते कुह among the following options कोटा हबो साउथ वेस्ट हबो या फिर मते कुह पुरी एंड खुर्दा हबो ऑप्शन देखि के आंसर दियो ऑप्शन देखि के आंसर मते दियो पुणी भूल भाल मारुछ पुणी कहले तमे कहबो कि मैम भूल कहले among the following options which region Odisha experience the high winter rainfall तो कोन मु तमन को कोस्टल रीजन कथा कहितिला नै मते को गध दळ टिके मो कथा सुण गध दळ टिके मो कथा सुण कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर विंटर एबे बैक करिवि पुणी बैक करिवि तो पूरी खोर्धा को तो माने पूरी ऑप्शन अछि फिर भी तो माने मम इच्छा ए बी सी माने ए सी डी किछि भी मारुछ अरे पूरी ऑप्शन अछि आपनकर बे ऑफ बंगाल रु लाइक एवापोरेशन है कि पुणी बे ऑफ बंगाल को जाए पुणी बे ऑफ बंगाल रु हीट वेव आसे तो एमिति तो आपनकर लैंड रु लाइक सी रु लैंड को चेंज हुए फिर भी भूल भाल मुंडा पिटी देवा को इच्छा होछ तुम मान को सहित so in Odisha the coastal district particularly Puri and Khordha experience a higher winter rainfall due to the influence of the northern east monsoon and cyclonic disturbance from the Bay of Bengal with some hilly areas okay ना पूराटा काई देखिबो पूराटा देखिल तमे मो ऊपर दया कर दबो ना कि पूरा देखोनी आसो which of the following areas in Odisha receive low winter rainfall एबे कुआ रिसीव करूची लो विंटर रेनफॉल एई ऑक्सफोर्ड रो जो क्वेश्चन उडा आनी नथिली कि से ऑक्सफोर्ड वाला क्वेश्चन ही त माने करि पारुना बुझिलो सेथि पई म ओडिसा भितरु को आसी पारुनी चित्तरे पिलांकर भूल हे जाउची ठंडा पानी नेकी ढाल देबी तम माने को ऊपर जाननो मते आसो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन ओडिसा रिसीव द लो विंटर रेनफॉल पूरी खोटा कोइटी रिलेट करइबो नाही कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बारीपदान सुंदरगढ़ फुलबाणी एंड फिरिंगिया अछि तो रिलेट कहा को एठी करे परिबो मते कुओ रिलेट कहा को करे परिबो क्विक सी पुणी कला बारीपदा सुंदरगढ़ कोरापुट देखा गलानी कोरापुट आपन का देखा गलानी जोठी ड्रॉट कंडीशन पड़े आसे रेनी रे तो आपन का एठी आसुनी मते मते कोंतु रेनी सीजन रे जदी आपन का एठी लोएस्ट रेनफॉल आसुची ताले विंटर रे कोथि पे आसुथुबो तो विंटर रे तो आहुरी कम आसुथुबो ना इच्छी करि परिबन त माने आसो द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओडिशा इज नोटेड फॉर द रिसीविंग कंपैरेटिवली लो रेनफॉल ड्यूरिंग द बोथ विंटर एंड मॉनसून सीजन एत्ती की त बुझो से मौसमी कोडेला मौसमी जदी भूलभाल आंसर मारु थांता आसो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विंटर रेनफॉल इन ओडिशा द सिग्निफिकेंस ऑफ विंटर रेनफॉल कोन हो ओडिशा रे माने वर्षा सामान्य आजिरो क्लास अछि किछि नै मते लागुची खाली रेन ऊपर क्लास फिर भी तम मानकर भूल आंसर माने भाबो मोर पेशेंस को भाबो कि तम माने को मैं नै की क्लास करूची केते धैर्य शक्ति मोर जस्ट इमेजिन मो प्लेस रे केडीएस थांते एंड तम मानकर कोन सब उडु थांता आसो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विंटर रेनफॉल इन ओडिशा ओडिशा रे विंटर रेनफॉल रो सिग्निफिकेंस हमें कोन नै परिबा व्हाट कैन बी कोन कहिची सपोर्ट्स खरीफ क्रॉप अरे खरीफ क्रॉप कोन बे आसीबो जेते बेले आपन को कहिची विंटर कथा आपनकर रबी क्रॉप पड़े आसीबो सो ऑब्वियसली फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ द रबी क्रॉप ऑप्शन सी ए गोटी आंसर सी मारिचो ए गोटी आंसर त माने ठीक करिचो टोटल क्लास भीतर हैला चलो थैंक यू सो मच या पे नेक्स्ट मते को द विंटर रेनफॉल इन ओडिशा टू लिमिटेड इज इंपोर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप्स व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा आर नोन Which districts in Odisha are known to receive significant winter rainfall due to their proximity to the Bay of Bengal? Malkangiri, Koraput, देखो जेते बेले Bay of Bengal कथा कहूची आपण मानको माइंड को आसी जिबा कथा कि Bay of Bengal सहित गोटिए डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड दैट इज पुरी
तापरे भी जदि तमे माने सी मारुछ तमे माने महान तापरे भी तमे माने सी मारुछ तम मानक पाद धूली मते दरकार बुझिलो तापरे भी जदि तमे माने सी मारुछ तम मानक घर एड्रेस दियो मु सकाळु बस रे जाईकी पहुंची की पाद धूली टियासिली खोरे नेकी आसीबी आउ किछि ऑप्शन नाही. So the district in Odisha known for the receiving significant winter rainfall due to the Bay of Bengal proximity, that is the Cuttack and Puri. Next, Fez Plateau. Fez Plateau in Odisha receives high winter rainfall. तो मते को plateau रे हमें relate करूछे. हाँ तम घर को सत्तरे जीबी. मौसमी लाज लगुनी कोरापुट रहे की मते को Fez Plateau in Odisha receives high winter rainfall. तो को plateau कथा इठी आपण माने को पचारि छी फुलबाणी फिरिंगिया वर्ड आपण माने सुनिथिबे जोठी की ओडिसा रो माने दैट इज द रीजन जोठी आपण को ओडिसा रो हाईएस्ट रेनफॉल एक्सपीरियंस हुए. सो रिलेट करे परिबो की फुलबाणी सहित यस और नो फिर भी भूल देइचो ए मारी छी किए सीमांचल ए मारी छी दैट इज कोरापुट मारी चंदी सीमांचल बाबू हे प्रभु मु पा कोरापुट देइथिली क्वेश्चन आंसर एइथे कोरापुट देलनी तम घर देखि की एइथे कोरापुट देलनी फिरिंजिया एठी ऑप्शन ने अछि गधस्थल माय डियर गधस एंड गधिस एठी फिरिंजिया ऑप्शन ने अछि मते मो बेस्ट फ्रेंड को सब बेले मो क्लास जते बेले से विजिट करे आफ्टर लाइक सीइंग माय क्लास एंड रे केते चिल्लै पार छु ब्लैंक ऊपर कोई तू थरे आसी के मान पाखे खाली क्लास करिके देख जेते साइलेंट रु साइलेंट गोटे पर्सनालिटी थिबो ना से चिल्लेबो आ एमिति रे त मु साइलेंट पर्सनालिटी ही नु देइसी फुलबाणी हां दया करछ मो ऊपर सब फुलबाणी देकी द फुलबाणी प्लेट्यू लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओडिशा रिसीव्स द हाई विंटर रेनफॉल ड्यू टू द सीजनल western disturbance and the occasionally cyclonic depressions that affect the region. Clear आज्ञा OTT syllabus एटा OTT syllabus black ambo कौन ना लिखाई सी black mambo ना black ambo मैम आपण गाँ को गले लक्ष्मी बस अच्छी कि थिबो डेफिनेटली सब एरिया रे लक्ष्मी बस अच्छी ना आम गाँ रे भी थिबो दो आई डोंट नो एक्जेक्टली बट थिबो ओके आसो तो आज क्लास आपण मानकु गोटे समरी रो सहित मु कहिबे कि कोन थिला टोटल क्लास मते कहंतु आपण माने आज क्लास रु कोन माने किछि सिखिले नुवा जिंस कोन जानले ओडिसा रा क्लाइमेट ऊपर किछि आईडिया आसिला को टाइप रो रेनफॉल पैटर्न रुही आपण मानकर को सीजन रे को रेनफॉल आसे एक्सेट्रा किछि एनी आईडिया या फिर एमिति क्लास कलो टाटा बाय बाय गुड नाइट को मते तो एथरे हमें कहि परिबा कि ओडिसा रा क्लास सॉरी नी वेट अ मिनिट क्लास सॉरी नाही आहुरी 10 मिनिट अछि काई एमिति होछ क्लास सॉरी नी वेट तो ओडिसा रा क्लाइमेट हमें कहि परिबा कि डोमिनेट करी कि रखुची काहाकू इट्स अ रिलेशनशिप विथ द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट तो काहा भितरे जदी क्वेश्चंस आपन को सब बेले पचारिबो ताहाले हमें कहि परिबा कि ना ओडिसा रा क्लाइमेट ओडिसा एंड तारा क्लाइमेट काहा ऊपर डिपेंडेंट ना बे ऑफ बंगाल एंड आपनकर ईस्टर्न घाट ऊपर डिपेंडेंट ता भितरे ही आपनकर टोटल कोन बही खत्म हे जाउची एंड आपनकर जो windward आसुची versus the कोन ना leeward effect leeward effect कोन जानि छ तते बेले साउथ वेस्ट मॉनसून आसुची that hit the eastern घाट क्लियर सुना सब बेले क्वेश्चंस रे आपण मानको जदी windward आसीबो leeward आसीबो आपण माने कंफ्यूज हेबे जते बेले आपनकर साउथ वेस्ट मॉनसून आसुची सपोज एटा आपनकर साउथ वेस्ट मॉनसून आसीला मैप करि देले बेटर हबो ना कि नहले भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कले आपण माने बेटर जानि तो आपनकर बे ऑफ बंगाल ओके तो एठी आपनकर कोन आसिला अरे ईस्ट वेस्ट हां ठीक है तो साउथ वेस्ट ओके तो साउथ वेस्ट मानसून जते बेले ओडिसा को एंटर करूची टू व्हाट ना ईस्टर्न घाट देकी फास्ट आपनकर हिट काकू करिवो ना ईस्टर्न घाट को एई पटु आसिले आपनकर याकू हिट करिवो देन आपनकर बे ऑफ बंगाल को जाईकी पुणी आसी
here flow आपनकर केमिति थाए this then आपनकर एठी हीट है कि ईस्टर्न घाट जेतु प्रेजेंट देन आपनकर एमदी आसे राइट और नो हाँ माउंटेन रा फ्रंट साइड हेले वेरी गुड चंद्रशेखर तो हमें कहि परिबा फ्रंट साइड हेले तले ईस्टर्न घाट रे हीट करे द कोस्टल साइड को हमें कहउचे दैट इज द विंडवर्ड दैट गेट्स अ हेवी रेन जेतेबेले विंडवर्ड हबो आपनकर सेटा हेवी रेन एक्सपीरियंस करिवो whereas the western side कहले कोन कहउचे जेतेबेले ईस्टर्न साइड हबो जेतेबेले भी विंड ता ईस्टर्न साइड हबो ताकू हमें कोन कहउचे ना विंडवर्ड कहउचे जेतेबेले वेस्टर्न साइड हबो ताकू हमें लीवार्ड बोली कहउचे लीवार्ड ता मने रखि था कौन कहउचे एल डबल ई लीवार्ड मन रखि था हैला टू गेट द एठी आपनकर कोन वे लीवार्ड को जगह रे आसे ना बलांगीर हेला नुआपड़ा हेला तो एई रीजन रे आपनकर आसे जेकी रेन रा शैडो रीजन हमें ताकू कहउचे दैट मीनिंग व्हाट द माउंटेन्स आर ब्लॉक्ड विथ द मॉइस्चर तो मन रखो सपोज हमें कहउचे इफ यू स्क्वीज ए लाइक गोटे कोन देखेबी देखिले कि छोटे एग्जांपल छड़ा तो अपन स्पंज को अपन माने धरि चंदी एंड स्पंज को अपन माने स्क्वीज करू चंदी जस्ट इमेजिन आज ताकू एग्जांपल लियंतु क्लाउड बोले गोटे स्पंज अछि सेटा जते बेले स्क्वीज करू चंदी आकाश रे क्लाउड्स माने आपनकर अछंदी सेटा जते बेले खसी होचंदी माड होचंदी परस्पर भितरे सेते बेले पानी बाहर जस्ट लाइक ए यू स्क्वीज द स्पंज हना नहीं मते को तो टीवी तो देखा जीव ना ऑब्वियसली असुविधा कौन टीवी देखा आस टीवी अच्छी बोल तो तुम कमेंट्स पढुची नले कमेंट्स से तळे देखि बढिया पड़था तो मते कुह इफ दैट अगेंस्ट ए वॉल आपनकर होउची जदि स्टे जिंसटा आपण माने सामना रे करूछंती एठी अछि आपनकर कोन सी दिस इज अ ईस्टर्न घाट सामना रे आपनकर स्क्वीज कली एटा गोटे वॉल just like eastern ghat this is like cloud and मु एटा को स्क्वीज करूची देन पानी आपनकर सामना रे पडुची हन नै मते को वॉल रो ऑपोजिट न करी कि अगेंस्ट रे होची माने वॉल रो सामना रे होची बट जते बेले आपनकर वापस एपटे होची ताले एटा अगेंस्ट हे गला ये आपनकर वाटर साइड हे गला द वाटर स्टेज ऑन कोन वन साइड आपनकर एठी हे गला एठी मैटर करबो कोन ना अल्टीट्यूड रूल आपनकर मैटर करबो बट ना अल्टीट्यूड रूल आपनकर कोन कहबो ना विंड डोंट कोन जस्ट हैव द फोर सीजन ओडिसा रे एक्चुअली ट्रेडिशनली 6टा सीजन अछि बट हमें एक्सपीरियंस करूचे केते ना एग्जैक्टली 4टा सीजन करूचे तो फोकस करिया को पडुचे हमको 4टा मेन क्लाइमेट फेजेस ऊपर जेमिति कि आपनकर कोन ना फर्स्ट हीट वेव आपनकर आसुची अन नै को मते फर्स्ट आपनकर हीट वेव आसुची जोटा कि गोटे फेज हमें कहि पाछु ग्रीष्म ऋतु मार्च टू जून पर्यंत आसुची देन आपनकर वर्षा सरू सरू सांगे सांगे शीत आसी जाउची सॉरी ग्रीष्म सरू सरू सांगे सांगे वर्षा आसी जाउची दैट मीन समर परे आपनकर सांगे सांगे रेनी आसी जाउची तापर आपनकर बहुत ही कम पीरियड पई कहिबा को बोले शरद एंड हेमंत मिक्स वाला में ट्रांजिशन फेज को एक्सपीरियंस करूचे डायरी ऊपर पानी ढाली की बुझेले भलो होंता ऑफ कंट्रोल आसो तो डेफिनेटली तापर आपनकर विंटर आसी जाउची दैट इज द ड्राइएस्ट सीजन हमें कहि परिबा द ड्राई द कोल्ड दैट इज हमर कोन शीत सीजन पळे आसुची ओडिसा रे सो एथिरे आपनकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हे जाउची जेथरे विंड्स आसुची मेडिटेरेनियन रो एंड ब्रिंग द कोन ना आपनकर लाइट रेन आसुची सरप्राइजिंग लाइट रेन हमें ताकू कहि परिबा ओके तो एग्रीकल्चर यदि कहिबा हमें बहुत टाइप रो एग्रीकल्चर अभी हेला खरीफ हेला आपण माने एक्सपीरियंस करूचंदी मेन क्रॉप हमर जानचंदी ओडिसा रे कोन आछि ना पैडी क्रॉप इज द मेन क्रॉप दैट यू ऑल नो यस तो बाकी छडो तो माने बुझेबा मूड भी पूरा ऑफ कर दोचो तो तो माने बुझियो जति कि बुझिया कथा बाकी अधिक ज्ञान हेले तो माने कर ओवरफ्लो हो जाउचे मैडम को भी क्लास रे कमेंट करिया को तो माने पछो ना कि आसो हाँ मैम को भी कमेंट करके कहउचंदी पाठ पूरा गजुची हो पूरा आसो अधिकारी बैच यदि आपण माने नेबा को चाहुचंदी देन गो फॉर द प्राइस 6999 जेथि 1 ईयर वैलिडिटी अधिकारी प्री प्लस मेंस यदि आपण माने नेबा को चाहुचंदी 1.5 ईयर वैलिडिटी 11999 एंड एल्स किछि मेंस ऑप्शनल यदि आपण माने नेबा को चाहुचंदी 1 ईयर वैलिडिटी सहित रिस्पेक्टेड प्राइस अछि आपण माने जाई परिबे हियर इज द कांटेक्ट नंबर एंड आपण माने को
आंसर एठी मिल जी बाकी जदि वन डे एग्जामिनेशंस पे आपण माने प्रिपेयर करछन 3999 रे आपण माने बैच नहीं परिबे महापैक वैलिडिटी 2 ईयर एंड ए सब बैच आपनकर वैलिडिटी 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर बट एल्स महापैक 2 ईयर एंड ए महापैक भीतर आपनकर सब एग्जाम जदि आपण माने कंबाइन करूछन ताटू अधिक होबो बट स्टिल महापैक को आपण माने जाय परिबे चला सो सिविल सर्विस पे भी आपण माने अच्छा सॉरी ये डबल रह जाई छी इट्स ओके सुदीप्ता जीके नेटवर्क इंस्टा रे मते आपण माने फॉलो करि परिबे बट ए क्लास रा पीडीएफ पाइबा पे दिस इज द टेलीग्राम चैनल तार स्कैनर स्कैन करके जॉइन होंतु एंड पीडीएफ आपण माने सेठी एंड ऑफ द सेशन एंड ऑफ द क्लास मु शेयर कर दैट्स इट थैंक यू सो मच आपण माने को बुझेबार किसी पॉइंट नाही कोड सब पिला आसंती मु जानि भी पारेनी मूड रो सत्यानाश कर दियंती ओके चलो थैंक यू सो मच तमने टिके एंड हे जाओ एक्सपोर्ट क्लास एंड करूची तो मैंने लेफ्ट ही जाओ क्लास में सर क्लास को टिके वाइंड अप कर दियंतु